Okay, students, due to some of the disturbance, we end our class and I will be send a video that I told you. So as I say that we have two actions of two attributes of the form. First is the action, which type of action you can perform whenever you whenever you submit your form, and method, if you want to submit your personal detail to the URL, then you can use the get method, and if you want to don't submit your personal information on the URL, then you can use the post method. Okay, so first of all, we are going to make this form, that is the name, and there will be a one box will be given, that is the text box. So we have to be use the text, write down the name as it is, you can see. Now we have to make a one text box to insert the text. आपको text insert करने के लिए आप text box का use करना पड़ेगा, means you have to take a one input. So for that you can use the input attribute, sorry, input tag. To insert any of the document, any of the detail in the form, you have to first use the input. आपको टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन आपको इंसर्ट करना है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर सबमिट बटन है, तो आपको फर्स्ट टैग यूज करना पड़ेगा इनपुट. इफ यू आर नॉट राइटिंग द इनपुट, इट विल बी नॉट शो द एज अ इनपुट. वो इनपुट की तरह नहीं डिस्प्ले करेगा. यूजर विल बी नॉट टाइप दैट थिंग, यूजर उसको टाइप नहीं कर पाएगा. Now input, what we have to be used, we have to be made a one text box. So it's a type equals to text. आपको text enter करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे text. Input type equals to text. Then name. These are two attributes of the input tag. First is the type and second is the name. Name type, you can see that अगर आपको text insert करना हो, then you can use the text. If you want to insert the radio button, then you can add write in place of the text the radio. But what is the use of the name? Whenever you are save your submit to button, then it will be saved with name of this file. आप जो भी नाम लिखोगे उसी फॉर्म में वो सबमिट होगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा only name. So अपने आप से ही एक फोल्डर नहीं बोल सकते हम, दैट विल बी क्रिएट अ वन लिंक जिसके अंदर आपका जो नेम आप जो भी लिखोगे इस टेक्स्ट बुक के अंदर वो वहां पे सेव हो जाएगा. सो नेम, दैट्स इट, एंड आई यूज अ वन VR tag. Okay, I will use this later. So save this. First of all, I will be show you that thank you HTML वो किस तरह से दिखेगा. Then I will be open the forms. So this is the thank you HTML, and whenever you click on that, you can see that thank you for your response. This is the heading tag. If you want to remove the heading, then you can. Okay, I just do one thing. In the thank you.html, I will be use the h3 tag. You can remove the p tag now. तो वो क्या होगा, हेडिंग आपको अच्छे से दिखाई देगा. And I also remove the forms, so that will be show you the output like this. Thank you for your response. This is the thank you h.html. Now we are going to show the forms.html from the desktop. This is the forms.html. I'm double click on that, so you can see that the heading will become personal detail. You can write down that any of the thing. For example, I am writing my own name, Zifa. So you can insert any of the text whatever you want. आप कोई भी text insert कर सकते हो, even with a number. Okay, so this is, now we are creating a name. What will be the second? Second is the password. We are not writing now a password, just because for the password we have to use the different method to insert a password. You can see that whenever you enter the password, it will show the bullets or the stars. वो आपको डिस्प्ले नहीं होने देता URL. So उसके लिए अलग मेथड होगी. So only we are going to learn the next one, that is the email ID.
So same thing, you can see that it will be use the text box. So email e. Now again, input first attribute type equals to, we have to again insert the text. So text, remember one thing, name will be different from the previous one. Name different होना चाहिए. अगर आपने name में यहाँ पे name लिखा है तो second वाले में name different होना चाहिए, वरना सारी value उस पर replace होती रहेगी. कोई एक ही value जो last आप submit करोगे सिर्फ वही value submit होगी, first value URL में submit नहीं होगी. Name equals to email and close. Save and show you the output. Refresh, तो आप देख सकते हो email it also come. I'm using the BR tag, so that's why it will be comes down. Save. Now what will be the next in the form? That will be a gender, means male or the female. So I'm writing here gender. Okay, so again you have to use the input space type. ओके, फर्स्ट अगर आपको टेक्स्ट बुक इंसर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, यू आर राइटिंग द टेक्स्ट, बट नाउ यू हैव टू बी इंसर्ट द रेडियो बटन, सो यू आई हैव टू बी राइट द रेडियो ओनली. रेडियो, ओके, नेम equals to, for example, I am writing the G1 name, simple name I am writing here. And you have to also write down the what should you want to insert. For example, male, then you can, I'm taking the same input and take a male, sorry, female in place of male. Okay, type radio. Okay, group name, I am changing the group name G2. So let's check an output. Refresh. So name, email ID, sender. Okay, I forgot to use the BR. Using two BRs will be not all sticky. Saved and refresh. So name, email ID, male, female. So I'm writing here my name, then email ID xyz@gmail.com. Now selecting a gender, male and female. Oh, you can see that both are selected. What will be happen, अगर आप देखते थे रेडियो बटन में सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो पाता था, एनी ऑफ द रेडियो बटन. सो फॉर दैट व्हाट शुड यू हैव टू डू, यहाँ पे हम क्या करते थे, सब में नेम डिफरेंट रखा था, मतलब सबकी वैल्यू डिफरेंट प्लेस पे से होती थी. बट इन द रेडियो बटन यू हैव टू टेक द सेम नेम फॉर एवरीवन, एवरीथिंग. अगर आप G1 ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, whatever you are writing the name, but for all the radio button you have to take the same name. सिर्फ जेंडर के लिए हमें दो में से सिलेक्ट करना है तो आप सेम ग्रुप नेम रखो. दिस इज कॉल्ड द ग्रुप नेम. दिस विल बी मेड अ वन ग्रुप. उसमें से आप कोई एक सिलेक्ट करते हो, कर सकते हो इफ यू आर राइटिंग द सेम नेम्स. बट इफ यू वांट टू क्रिएट अदर रेडियो बटन देन नेम विल बी डिफरेंट. अगर आप दूसरे रेडियो बटन से बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रुप के नेम डिफरेंट रखने पड़ेंगे, लेकिन वो ग्रुप में सभी के नेम सेम आएंगे. लाइक दैट जेंडर में मेल फीमेल है तो दोनों का ग्रुप नेम सेम आएगा. अगर आप दूसरा रेडियो बटन बना रहे हो, जैसे कि हॉबीज के लिए, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ रेडियो बटन दैट डांसिंग, सिंगिंग एंड स्टडिंग, these are the three options, तो उन 3 के नेम सेम होंगे. बट it's not be like a male and female group, means G1 नहीं होने चाहिए, name कभी भी repeat नहीं होने चाहिए. That is dependent on you that which type of name you can take. So I'm saved it and now show you the output. Again writing
my name, my email address xyz@gmail.com. Now you can select from the male और फीमेल. आप देख सकते हो आप दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, या तो मेल या तो फीमेल. So from birth you can select only one. So this is the use of the radio button. Now how can you submit your form? Okay, before submit we have to again check here contact number. So you have to again use the text box. So I am taking a copy of that. BR and BR again. Control V. In place of name, I am taking the contact number. Input text, and you have to change the name here, the contact. Save. Show you the output, and it will be contact number will becomes here. Now we are made a tag here. You can see that we will learn this thing like educational qualification later. Now we are going to learn the hobbies. That will be a check box. आपको check box बनाने हैं. तो first of all you are have to be write down the hobbies. Hobbies and space. Again you have to take an input type. Now this time you have to be write down the check box in place of the text. And yes, so for example I'm taking the name as a C1, and what could be the names of that? Playing chess, reading books. Playing chess. Then second, just copied it. Checkbox. Reading books. Take a one more. Singing. That's it. Sorry. Okay. So three hobbies I will be take and show you the output now. Refresh and you can see the hobbies: playing, reading, singing. These are the checkbox. मतलब आप कोई भी select कर सकते हो. But I suggest you that you have to be change the group name, क्योंकि उसकी value एक में ही store होगी, तो उसकी वजह से आप सबकी group name change करोगे. Reading, singing, and you can select all of them just because it's a checkbox. तो आप तीनों के तीनों एक साथ भी select कर सकते हो. In the checkbox, that is the possibility to select the threes. बट अगर आप ग्रुप के नेम सेम रखोगे तो क्या होगा कि लास्ट वैल्यू जो आप क्लिक करोगे, टिक मार्क करोगे, सिर्फ वही वैल्यू स्टोर होगी, आगे की वैल्यू स्टोर नहीं होगी. नाउ इट्स टाइम टू अटैच द सबमिट बटन. We have to take the same thing again. Take a 2 BRs, input type, Control V, input type. Now we have to be submit, create a submit button. So you have to be write down the submit only. And name will be changed. For example, I'm taking the submit. Saved. And show you the output. Refresh. So submit button will be came here. So let's start to fill the form. अगर आप submit button पे click करते हो तो output उसका मिलने चाहिए. Thank you for the response. Okay, now write down the name.
filling the details. Mail, contact number, clicking on the two one and click on the submit. Whenever I click on the submit, you can see that it will be show the response. Thank you for your response. So this is a one form. Now I gave you one task, create the same form. आप यही form बनाओगे. You have to pause the video now and you can see the hold the form, take a snapshot and create your own form. आप अपना form बनाओ और उसको फोटो खींच के सबमिट पे क्लिक करके क्या होता है उसकी वीडियो बनाओ and send it on my personal number. So this is a task for you. And I have to also, I think there will be in the book, there will be also one given to you that will be only for your practice. Yes, that will be a one फॉर्म इज दैट. यहाँ पे भी बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी एक फॉर्म है, आप प्रैक्टिस के लिए वो भी बना सकते हो. एंड कंपल्सरी यू हैव टू बी मेड दिस फॉर्म्स व्हाटएवर आई मेड इट. Okay, so thank you so much. I will be seeing the next video soon. Thank you so much. Have a good day. Bye everyone.